इंडिकेट करेगा स्टूडेंट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। रेड कलर आकर आर्टरीज, दैट इज रेड कलर इंडिकेट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, सो इनका काम क्या होता है स्टूडेंट्स, दे विल बी कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ओके, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है ना, which will be having carbon dioxide in them, that will be brought towards the heart by the vein students। okay, और इनके ना थोड़े थिन वॉल्स होते हैं, इतने थिक नहीं होते क्योंकि ना ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता स्टूडेंट्स, और ना बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए ना इनका ना बड़ा ही थिन वॉल्स होता है। और ना एक्सेप्शन आकर पल्मोनरी वेन होता है स्टूडेंट्स, बिकॉज इट विल बी कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। ओके, सो इनका लार्जेस्ट वेन आकर वेना कावा होगा स्टूडेंट्स। All right, the largest vein will be vena cava in this। so coming to the capillary students, a network of tube that emerge both arteries and reunite in the veins। तो दोनों का पॉइंट बोलते हैं ना, सेंटर पॉइंट, तो उसको ना कैपिलरी कह सकते हैं, जहां पे ना दोनों आर्टरीज और वेन्स मर्ज होते हैं स्टूडेंट्स, एक ही जगह पे रीयूनाइट होती है। ओके, जो भी न्यूट्रिएंट्स होती है, ऑक्सीजन होती है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को ना विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज ओनली इट्स ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द अदर पार्ट्स। ओके, और जो भी वेस्ट होती है, अननेसेसरी थिंग्स होते हैं, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड होता है फ्रॉम द अदर पार्ट्स ब्रॉट टुवर्ड्स द body parts is with the help of capillaries only। Is that clear, students? Yes, following. I hope the concept is pretty much clear. Yes. So let us move ahead, students। अब हम पोल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हियर कम्स द पोल क्वेश्चन। सो हियर कम्स द पोल क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आपके पास ना 45 सेकेंड्स होने वाले हैं। 4 स्टेटमेंट्स है स्टूडेंट्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई विच आर द राइट स्टेटमेंट हियर। Okay, so yes students, so here comes the question। Just a minute। Yes, students. Veins carry blood from heart to all the parts of the body. Arteries and veins are joined by a network of capillaries. Arteries have valves which allow blood to flow only in one direction. The exchange of respiratory gases, blood, and tissues takes place in capillaries। तो कौन सा statement सही है? You have to identify that, students। ठीक है? Yes. Okay. Yes, students, time is up. So let's see. Answer is option 2 and 4 only. Option D. Okay. So statement 2 and 4 are right here. Okay, let's see. Veins carry blood from heart to all the parts of the body। Okay, तो veins का काम क्या होता है students? They will be carrying, yes, what the vein will be carrying? It will be carrying oxygenated blood or deoxygenated blood। Great, so oxygenated blood from the heart is carried to the various parts of the body with the help of the arteries, not Vein the will veins। carry तो यहाँ पे क्या होगा deoxygenated blood. students? This statement is wrong here। Okay, so this statement is wrong here। Yes, students। So coming to the next statement, arteries and veins are joined with a network of capillaries, students। तो हमने हमने डिस्कस किया था आर्टरीज और वेन्स ना एक जगह पे रीयूनाइट होते हैं स्टूडेंट्स, उसको ना हम कैपिलरीज कहते हैं, राइट। सो this is definitely right। Arteries and valves which allow blood flow to flow in one direction। No, students, arteries and valves they'll allow the blood flow in both the directions, राइट। जहां पे ना वेन्स का ना वेनस वॉल्स होते हैं, जहां पे ना बैकवर्ड फ्लो हम अवॉइड कर सकते हैं, राइट। सो विच में अकर ड्यू टू द लो प्रेशर। सो कमिंग टू द फोर्थ स्टेटमेंट स्टूडेंट, द exchange of respiratory gas between blood and tissues takes place in capillary। so this is correct। तो रेस्पिरेटरी गैसेस होते हैं ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज और जो भी ब्लड की होती है, सो दैट विल बी टेकिंग प्लेस विद द capillaries only। okay, so both the statements are true, students। so let us discuss about the human heart now। ठीक है, so this is the structure of the human heart, students। and आपको पता ही है human heart is located in the chest, correct, between the lungs, and it is protected with a rib cage, right। so ये ना लंग के बीच में होती है स्टूडेंट्स, और rib cage से प्रोटेक्ट किया हुआ है, which is the skeletal system। तो ह्यूमन हार्ट में ना हम 4 चेम्बर्स देख सकते हैं। ये आकर राइट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, स्टूडेंट्स। और इन दोनों चेम्बर्स के बीचों में ही हम देख सकते हैं सेप्टम, which prevents the mixing of the blood, students। okay, so right side of the heart
करना, it will be dealing with the oxygenated blood. Left side, left side of the heart will be dealing with the oxygenated blood. Right side of the heart will be dealing with the deoxygenated blood, students. Okay, so I hope it is clear. Yes, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो क्या होता है स्टूडेंट्स, द राइट साइड, जैसे मैंने आपको बताया, द राइट साइड ऑफ द हार्ट इज विल बी डीलिंग विद द ऑक्सीजन रिच ब्लड ओनली. ओके, तो जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है स्टूडेंट्स, दैट विल बी डीलिंग विद द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. जो सेप्टम होता है स्टूडेंट्स, इट विल बी अवॉइडिंग द इंटरमिक्सिंग ऑफ द ब्लड. करेक्ट. सो हार्ट की ना रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से ना द ब्लड विल बी फ्लोइंग, ब्लड विच इज, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है ना, आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल स्टूडेंट्स. ओके, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है ना स्टूडेंट्स, फ्रॉम द लंग्स इज सेंट टू द ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. स्टूडेंट्स, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है ना, फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट्स, इट इज टेकन and it is oxygenated and then it is sent to the other body parts, right? So this is the basic process happening. ओके, तो लेट अस सी द प्रोसेस इन डिटेल स्टूडेंट्स. तो ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, पहले हम डिस्कस करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में, जो सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में. जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है स्टूडेंट्स, पहले दैट इज फ्रॉम द लंग्स. Okay, lungs, from the lungs the blood will be circulating with the help of pulmonary vein. Students, pulmonary, जैसे मैंने आपको बताया, it is connected with the lung also, that's why the name pulmonary. तो इनका काम क्या होता है स्टूडेंट्स, the blood circulates through the network of vessels, right? जैसे हमने देखा यहाँ पे, from the lungs it will be transported towards the pulmonary vein, और then it is transported towards the heart. स्टूडेंट्स, पहले ना लेफ्ट ऑरिकल जाएगा स्टूडेंट्स, देन इट विल बी गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, सो इन द हार्ट, फ्रॉम द हार्ट इट इज पास टुवर्ड्स द मैम इससे पहले क्या कराया था? Okay, through the heart it is transported to the different body parts, whereas in deoxygenated blood, from the different parts the blood is taken towards the vein. From the vein it moves towards the heart, where first it will be reaching the right auricle, then towards the right ventricle. Students, uske baad na it will be reaching the pulmonary artery, and then the blood is sent towards the lung for the oxygenation. Students, to get converted into oxygenated blood again. Okay, so this is how the circulation happens in our body. Students, I hope it is clear. So let us solve the poll question now. So you will be having 45 seconds of time. This is the question number 6. So observe the diagram and identify what enters the chambers of the heart. So right auricle, you have to find out what is A, oxygenated blood or deoxygenated blood. So left ventricle, B, oxygenated or deoxygenated blood. Yes, students. Okay, time is running up. Yes, students. Okay, so here comes the answer. So B, deoxygenated blood, and ये option B is the right answer. So ये क्या होगा students, जहां से ना I hope I am visible, students. I hope I am clearly audible and visible. Screen is not visible, students. Now the screen is visible. Yes. योगा करो, भागो, जिस चीज का मेरी ये चीज और ये चीज बहुत होती दर्द है, है। होती है. उससे Please पहले to अभी नहीं जा confirm रहा। anyone. क्या आप मुझे I'm देख audible. सकते हो? सारे बच्चे आए थे, Yes, ma'am. Okay. सारे. कल आए थे इतने। Now. कोई absent नहीं था. Okay. Yes, Patil. Thank you for the confirmation, beta. तो So, is my video visible now? कर सकते हैं. Yes. Okay, students. तो जैसे हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स, राइट ऑरिकल deals with deoxygenated blood, right side of the heart, and left side oxygenated. तो यहाँ पे ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आपका deoxygenated blood होगा, राइट ऑरिकल. सो लेफ्ट ऑरिकल यहाँ पे डेफिनेटली oxygenated blood होगा स्टूडेंट्स. ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे
एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में स्टूडेंट्स. ओके, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ना विच प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्यूरिफिकेशन, इन द डाइजेशन, इन द throwing out of waste from our body, राइट. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में ना वी कैन सी मेनी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स. एक आकर ना टू किडनीज हम देख सकते हैं, राइट. सो इट विल बी हैविंग ए पेयर ऑफ किडनी स्टूडेंट्स, और टू एरेट्रास ए पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. किडनीज आकर ना बीन शेप्ड होते हैं स्टूडेंट्स, which is located in the backbone or the vertebral column students. इनका काम क्या होता है? They will be playing a very important role in filtering the blood also, okay, and observing the useful substances from the blood and removing the unnecessary things students in the form of urine. ओके okay? जो भी अननेसेसरी होता है ना वेस्ट, उसको ना रिमूव किया जाता है स्टूडेंट्स. और टू यूरेटर्स होता है स्टूडेंट्स. यूरेटर्स आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जहाँ जो ना किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में कनेक्टेड है स्टूडेंट्स. तो दिस यूरेटर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन carrying the urine which is separated by the kidney, filtered by the kidney towards the urinary bladder students. urinary bladder sac like structure है students जहाँ पे ना यूरिन को स्टोर किया जाता है, राइट. तो इट रीचेस देन टेम्पररी स्टोरेज होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे. या और ना यूरिनरी ब्लैडर को ना कनेक्टेड ना वी कैन सी स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, दैट इज यूरेथ्रा, थ्रू विच ना urine is thrown out of our body students. okay, जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, सॉल्ट, यूरिया, वाटर और जो भी होता है unnecessary things, that will be thrown through the urethra only, whereas carbon dioxide is excreted through the lungs only students. ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? इट विल बी हैविंग टू किडनीज, टू यूरेट्रस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. किडनी फिल्टर्स द ब्लड बाय अब्सॉर्बिंग द यूजफुल सब्सटेंसेस एंड रिमूविंग हार्मफुल सब्सटेंसेस स्टूडेंट्स. और जो भी सॉल्ट, यूरिया एंड वाटर होता है ना, दैट विल बी एक्सक्रीटेड बाय द excretory system. ठीक है, I hope it is clear students. So I'll be moving towards the question now. So here is the question. This is question number 7. बड़ा ही easy question है students. आपको identify करना पड़ेगा. Identify the correctly labeled part of the human excretory system. जहाँ पे ना correct labeling किया हुआ है. So ये लोग बता रहे हैं कि Q आकर urinary bladder है, R आकर ureter है, okay, so P आकर kidney है और S आकर urethra है. So which is right here? Quickly, I need the answer. Observe and tell me quickly. C, okay. Pragya, Shreya, she's telling C. So most of you people are agreeing with C. So let's see what is the answer, students. Definitely आप सब सही है बच्चों. Answer आकर यहाँ पे kidney होगा students. Okay. So this is the right pair students. This is actually ureter, which is actually mentioned as um, urethra, right, which is wrong here. Q is urethra actually, not the S. R आकर urinary bladder होगा students. So what are the concepts we have discussed? हमने circulatory system के बारे में discuss किया जहाँ पे ना left side of the circulatory system deals with oxygen rich blood and right side will be dealing with the deoxygenated blood. और हमने discuss किया how the oxygenated blood is transported towards all the parts of our body, or how deoxygenated blood which is present in all the parts of our body is taken towards the lungs for the conversion of oxygenated air, right. So that also we have discussed. और हमने discuss किया excretory system जहाँ पे ना blood को filter किया जाता है, right. So any doubts students? Yes, any doubts बच्चों? Slide of parts of blood transportation. Okay, so just give me a मैम minute. So this is, yes, is this the one you are asking, Rahul? यही वाला? Say yes or no, Rahul. Is this the one, Rahul? Okay, I hope this is the one. Any doubts friends, others? किसी को कोई doubts है? Now we are left with reproduction in plant students. ठीक है? Yes, thank you Rahul for the confirmation. I hope there are no doubts for anyone. So if no doubts, अब हम discuss करेंगे reproduction के बारे में. ठीक है? We are going to discuss so many interesting concepts. पहले आकर we'll be discussing about parts of flower students. जो आप ना green colored part देख सकते हो, that is actually calyx, which is the outermost part of the flower students. Okay? तो टिपिकल फ्लावर के 4 डिफरेंट लेयर्स होते हैं स्टूडेंट्स. एक आकर ना पहले हम कैलिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज ऑल्सो नोन एज सेपल स्टूडेंट्स. ओके, और इनका ना मेल रिप्रोडक्टिव आकर होगा एंड्रीशियम स्टूडेंट्स. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आकर होगा गाइडीशियम स्टूडेंट्स.
ओके, एंड्रीशियम को ना स्टेमन कहा जाता है, और गाइनीशियम को ना पिस्टिल कहा जाता है स्टूडेंट्स. दीज आर फीमेल रिप्रोडक्टिव, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ओल रेस्पेक्टिवली स्टूडेंट्स. ओके, और इनका ना स्टूडेंट्स एक वन मोर पार्ट इज दैट इज कोरोला, विच इज द कलरफुल पार्ट ऑफ द ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर स्टूडेंट. जो ना पेटल्स होते हैं बड़े ही कलरफुल होते हैं, विच अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स आल्सो टुवर्ड्स देम, राइट. अब हम डिस्कस करेंगे reproductive whorls in detail students. The male reproductive part of the flower, that is stamen, करेक्ट. तो स्टेमन में ना एक्चुअली दो और थ्री और इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, एंथर, फिलामेंट और एंथर में ना पॉलन ग्रेन होते हैं, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर. करेक्ट. तो एंथर कंसिस्ट ऑफ ए पॉलन सैक स्टूडेंट्स, जहां पे पॉलन ग्रेन्स होते हैं स्टूडेंट्स. तो दिस पॉलन ग्रेन्स विल बी मेजरली हैविंग व्हाट स्टूडेंट्स, इनमें ही ना मेल गैमेट होती है. So they will be having male gamete in them. Okay, so coming to the pistil students, pistil में ना three basic parts होते हैं, stigma, style and ovary. ovary के अंदर होती है ovule students. Okay, so ovule में ना female gamete होती है students, which is responsible for the reproduction. ठीक है. तो स्टिग्मा, जो स्टिग्मा होती है आप ऊपर देख सकते हो, इट इज अ स्मॉल सिलिंड्रिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, और स्टाइल आप देख सकते हो विच इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और स्वॉलन होती है, ओवरी बड़े वाली होती है. ओके, सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर स्टूडेंट्स. सो स्टेबल इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव, एंडिशियम, गाइनिशियम. ठीक है. सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम योर इन क्लास पीडीएफ. In the figure below, identify the parts whose descriptions are given below. X, the part which contains pollen grains. Y, the part where the female gamete is formed. Z, the colorful part of the flower. So what are the answers, students? What is X, Z and Y here? Come on. Which is anther here, which is filament, which is ovary here, and which is petals here? Why I can see no one is answering in the class forum? Come on. D. Okay, very good. कार्तिक, हिमांशु, इशिका, आर्यन, राहुल, यस. तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? यस प्रियंका, आंसर होगा डेफिनेटली डी हियर. सो एक्स आकर एंथर होगा स्टूडेंट्स, जेड आकर वाई आकर ओवरी होगा, एंड जेड आकर इट विल बी द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज पेटल्स. तो आपको पता ही होगा पॉलिनेशन, राइट? यू माइट हैव हर्ड अबाउट पॉलिनेशन स्टूडेंट्स. इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जहां पे ना हम ट्रांसफर ऑफ पॉलन देख सकते हैं स्टूडेंट्स. दिस टेक्स प्लेस बाय टू मेथड्स, करेक्ट. एक आकर सेल्फ पॉलिनेशन, टू टाइप्स है स्टूडेंट्स पॉलिनेशन में भी, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन. तो सेल्फ पॉलिनेशन इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन दैट अकर्स बिटवीन द फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, करेक्ट. ये ना दो टाइप की हो सकती है स्टूडेंट्स. एक ना सेम फ्लावर में उसकी ही एंथर और मेल और फीमेल गैमेट के बीच में हो सकती है. ओके, सो इट माइट टेक्स प्लेस इन बिटवीन द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ओके, और ना सेम प्लांट पे ही दूसरे फ्लावर्स से भी हो सकता है स्टूडेंट्स. पॉलिनेशन दैट अकर्स बिटवीन द डिफरेंट फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट स्टूडेंट्स. So this is about self pollination. तो क्रॉस पॉलिनेशन की बात करूं तो क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स इन डिफरेंट पार्ट्स स्टूडेंट्स, ऑन डिफरेंट पार्ट्स. ओके, डिफरेंट प्लांट्स में हम देख सकते हैं. ओके, सो इट यू कैन सी हियर दिस पाथवे, राइट. दिस प्लांट इज डिफरेंट, दिस बट द सेम टाइप प्लांट्स के बीच में होता है स्टूडेंट्स. क्रॉस पॉलिनेशन ना इंसेक्ट से भी हो सकते हैं, एनिमल्स से भी हो सकते हैं, विंड से भी कैरी कर सकते हैं, पानी से भी. So and this pollen grain can be carried with all these things students. Okay, so these are the different modes of cross pollination. So let us welcome our master tutor to understand about cross pollination in detail.